Hello children, welcome to our channel V Tutors. This is chapter number 2, Components of Food, class 6, and in my previous video we have seen the different sources of vitamin D and also discussed what are they useful for in our body. For today's video we are doing with the importance of minerals. Minerals are needed by our body in small amounts. हमारे बॉडी में मिनरल्स की ज़रूरत है, हर एक मिनरल्स की ज़रूरत है, बट उसका अमाउंट क्या है? कम है, लिटिल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट्स. Each one is essential. प्रोटीन्स आर ऑफन ईच वन इज़ इसेंशियल, मतलब हर मिनरल हमारे बॉडी में इसेंशियल है. ये जो पिक्चर्स हमने देखी थी ये सब these are all about vitamins. Now let's come to minerals. This paragraph is starting here. Each one is essential. From here we continue and we come here for proper growth of the body and to maintain good health. Means जितने भी minerals हैं वो हमारे बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ के लिए और गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है, दो दे आर इन वेरी लिटिल क्वांटिटी. नाउ एट द साइड यू गेट टू सी दीज सोर्सेज ऑफ आयोडीन, सोर्सेज ऑफ phosphorus, sources of iron and sources of calcium. These are all minerals which are required by our body in very small quantities. Now you see here for the sources of iodine, what are the products given here? Ginger, matlab adrak. There are some crabs also here. You get some curd and salt. It's salt, not curd. And there are different fish which are also a good source of iodine. So if you are consuming these things, that means your iodine content is going in your body. Then coming to the amount of phosphorus required. Here are some minerals given or cereals here. Green chili, potato and milk are the good sources of phosphorus. Then for iron you find here apples, liver and spinach. They are good sources of iron. And coming to calcium, calcium is basically having a good source with milk and eggs. Now most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed that while recording your observations in table 2.2, however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. So we say that rice is a carbohydrate rich food. अगर हम किसी भी फूड मटेरियल की बात करते हैं तो उसमें कोई एक कंपोनेंट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, पर जो कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि राइस में ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है और बहुत कम अमाउंट में फॉस्फोरस होता है, तो हम क्या कहते हैं? राइस इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट. वी डोंट से राइस इज़ रिच इन phosphorus, but yes, phosphorus is definitely present in rice. Now the next topic after minerals which we are going to see is dietary fibers. Dietary fibers are nothing but roughage. They are also called as roughage. They are mainly provided by plant products in our food. They come from whole grains, pulses, potatoes, fresh fruits, vegetables are the main sources of roughage. रफेज डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. रफेज के अंदर ना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट इट इज़ इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड टू एड इट्स बल्क. हमारे खाने को लमसम ज़्यादा अमाउंट में बनाता है ये रफेज. दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. अनडाइजेस्टेड फूड जब हमें एक्सक्रीट करना होता है हमारी बॉडी से, तो ये रफेज जो है ये बहुत काम आता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर रफेज, द वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इज़ वाटर.
water helps our body to absorb nutrients from the food. It also helps in throwing out some waste from the body as urine and sweat. Normally, we get most of the water of our body needs by drinking liquids such as water, milk, tea. In addition, we get water to most uncooked food. We add water to most uncooked food. Let's see if there is any other source which provides water in our body. So in activity 3 we are going to see if there is anything else also which provide water to our body. Let me tell you, this paragraph is very important paragraph which tells us about the importance of water. It's not that our water is important only to curb or fulfill our thirst. It is very important for some other points too, which we have just now discussed. So let us see now activity 3 to get to know more about water. Take a tomato or a fruit like lemon. Cut it into small pieces. Do your hands get wet while doing so? अगर आप टोमेटो या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल काटते हैं तो क्या आपके हाथों में पानी आ जाता है? Carefully observe whenever fruits and vegetables are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. Let me tell you, whenever we are drinking juice or beverages like tea, coffee, milk or any shake, water content goes into our body. But in the same manner, if we are eating any raw vegetables, fruits, salad, leaves, then also our body is getting rich in water content. Now in this chapter we also need to know what is a balanced diet. अगर हमारे खाने में हर चीज़ प्रॉपर अमाउंट में जा रही है, हर मिनरल प्रॉपर अमाउंट में जा रही है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, then dietary fibers, then we say that we are eating a balanced diet. It should be in proper adequate amount. Do you think that people of all ages need the same type of diet? Means एक छोटा बच्चा है उसका जो खाना है और जो बड़े बच्चे उनका खाना क्या सेम होना चाहिए? Let us see. Pulses, groundnuts, soybeans, sprouted seeds, then combination of flours like missi roti, thepla, all these things, then other such fruits provide many nutrients. Therefore, one can eat balanced diet without expensive food materials also. अगर हमें बैलेंस डाइट खाना है तो ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत पैसा खर्चा करना पड़े. हमारे घर में किचन में ही हमारे बैलेंस डाइट का सारा आइटम प्रेजेंट होता है. Okay, so whenever we are cooking or anyone is cooking at home, that person should keep in mind the requirements of the body and accordingly mix many pulses, then mix grains, mix different vegetables to provide the good amount of balanced diet to our body. If here in this paragraph, if you read yourself also, your self reading is very important. From here onwards, if you read, you will get to know that even when we are washing our vegetables, our grains, our pulses, then also a good amount of nutrient is getting washed away. तो हम जब भी कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या राइस या दाल को धो रहे हैं तो उस पानी को भी हमें नहीं फेंकना चाहिए. हमें नहीं यूज़ करना, हमें पीना नहीं है उसे, हम उसे प्लांट्स को दे सकते हैं सो दैट दे आर नॉट गेटिंग वेस्टेड. और जब भी हम खाना बना रहे हैं तो हमें एक्सेस ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी, वाटर शुड नॉट बी एडेड व्हेन वी आर कुकिंग द फूड. विटामिन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. एक बात आपको बता दूं,
विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो अगर हम खाने के टाइम, कुकिंग के टाइम, खाना बनाते टाइम गरम कढ़ाई में या कुकर में डालते हैं तो उसकी सारी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है importance. So if you want to have vitamin C, that is if you are using lemon to squeeze, always squeeze when the material is not hot or else उसकी पूरी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है. Then how do people get obese? Obesity कैसे आती है? अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच खाना खा रहे हैं, यू सी ओबेस मीन्स मोटापा. अगर हम बहुत ही ज़्यादा फैट रिच खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच खाना खा रहे हैं, स्वीट्स वी आर इनटेकिंग एंड विदाउट डूइंग एनी एक्सरसाइज. We should always do exercise along with taking balanced diet. If we are not doing so, then we get obese. मतलब हमें मोटापा चढ़ जाता है and this is a health condition. Our heart problems, issues can rise. Now this was all about today's topic. In my next topic we will be discussing about the deficiency diseases. इसका मतलब क्या है? Deficiency मतलब कमी हो जाना. अगर हम कोई मिनरल्स या कोई न्यूट्रिएंट को प्रॉपरली हमारे बैलेंस डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ बीमारियां हो सकती हैं जिन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो दिस विल बी माय नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय द टाइम स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडिंग, कीप मार्किंग द डिफिकल्ट वर्ड्स. थैंक यू.